Good afternoon. It's bright, sunny Sunday morning, and all eyes on Ludhiana, the virtual rally of the Congress leader Rahul Gandhi to declare the CM face for Punjab. That's, of course, in the event the Congress emerges in majority, if not in majority, at least it is enabled to have the number of MLAs in the elections, which would be able for it to be able to cobble up a figure which goes halfway past the 117 seats that are required to form the government in Punjab. So interesting day. Of course, it started on a morose note when the Nightingale of India, Lata Mangeshkar, passed away in ICU unit in Bombay. So condolence messages pouring in from all over the world, starting with the Prime Minister of India. And what we are told from social media pictures flashing around, that even in the venue of the virtual rally at Ludhiana, a huge poster of, I would say, immortal Lata Mangeshkar has been put up. So although there is official mourning of 2 days has been announced by Government of India, which means there shall be no official entertainment, and the national flag will fly at half-mast, doesn't mean the electioneering is going to come to an end. And I'm sure the leaders there would also pay homage to the Bharat Ratan, late Lata Mangeshkar. And as I stated before, her huge poster placard has been put up in the rally. In a build-up to this eventful day, first we had reportedly an interview remark of Mr. Sunil Jakhar, the former PCC president. And remember that he's himself not in the fray. He's not contesting as an MLA, but news had poured in, which had said that previously when they were selecting the CLP leader, he was the person who had gotten the maximum number of votes from the Congress MLAs. That was when the Congress party was looking for a successor to succeed Captain Amrinder Singh, who obviously had been ousted. So Mr. Jakhar is supposed to have said to the Hindu newspaper that he would be quitting active politics. And of course, he said, I will be a congressman and I will continue to support Congress party. So that's one part of the dimension. The other part of the dimension, of course, is news again from social media, from correspondents of reputed portals and magazines like India Today, saying that Mr. Jakhar is driving the vehicle in which Mr. Rahul Gandhi, who has landed already in Ludhiana, is being taken to the venue. I'm not sure whether they'll break for lunch before that or not. So Mr. Rahul Gandhi, driven by Mr. Sunil Jakhar, sitting on the front seat, Mr. Rahul Gandhi, and the two gentlemen, Mr. Charanjit Singh Channi, the present Chief Minister, and arguably the front runner for being named as the CM face on behalf of Indian National Congress for Punjab, and the one and only inimitable Navjot Singh Sidhu, the effervescent, energetic president of the Punjab Pradesh Congress Committee, is already there, along with Mr. Channi. So all the four people, it's almost like a Shakespearean drama, which is clinching and almost going towards a climax. Of course, this is a semi-final, and as I said, with a caveat to begin with, that it is really presuming and assuming that the Congress does cobble up a majority, opinion polls and opinions notwithstanding, wishful thinking notwithstanding, everything is only in domain of possibilities and probabilities. So what does Mr. Navjot Sidhu say today morning in his tweet? And I quote, this is 6 hours ago, and if you go specifically for the time on Twitter handle,
It is 8:21 a.m. today, the 6th of February. And he says, nothing great was ever achieved without an act of decision. Couldn't agree more. Decisions have to be taken. And decisions are like incisions. They got to be very precise. That's one of my favorite self-made quotations. So he said, nothing great was ever achieved without an act of decision. 4 dots. Warm welcome to our leading light Rahulji, comma, who comes to give clarity to Punjab. So that means there was haze, there was uncertainty, people were not sure, and the leading light, Mr. Rahul Gandhi, is arriving in Ludhiana for this virtual rally to give clarity to Punjab. And the concluding line is most important. All will abide by his decision, and there are 3 exclamation marks. Now, what does this really mean? What does this exactly mean? It means after vacillating and contradictory or apparently contradictory statements, Navjot Sidhu has finally, the final word is that we will all abide by the decision, whatever the decision is. Earlier, yesterday, addressing a press conference in Amritsar with the former AAP MP from Patiala, Mr. Dharmveer Gandhi. Of course, he's quit the Aam Aadmi Party, and now Mr. Dharmveer Gandhi is one of the most virulent critics of this said party. And in his presence, Mr. Navjot Sidhu said that it is the CM face which is going to determine whether Congress gets 60 MLAs or not, approximately half past the midway mark. So that means he's saying, well, the CM face is going to determine whether the Congress is going to cobble up a majority. Now, that is exactly the hypothesis on which, that is the premise, that is the assumption on which the Congress High Command would be working. Choose a person who would help you to get a majority. Now, the implication when Mr. Navjot Sidhu spoke, of course, was that I, the honest one, with no controversies attached to my conduct in public life, I am most suited. That was the implication. And then, of course, on various occasions, when people have said, who's going to declare the CM Punjab? Between the last time when it was said, between the Jalandhar rally and the Ludhiana rally, Mr. Sidhu on various occasions has made statements, I would say different statements, but statements which are amenable to different interpretation. And the interpretation generally is that people of Punjab are going to select the chief minister, and then saying that it's not the people of Punjab, but it is the MLAs who are going to select or elect the chief minister, so on and so forth. On the other hand, Mr. Charanjit Singh Channi, who's contesting from 2 seats now, Chamkaur Sahab in Ropar district and Padod in district of Sangrur/Barnala. So he is been quiet, going about his electioneering in normal course of business, and has been on record to say that it is for the High Command to, declare the CM face. Both of them, of course, are on record as saying that it is better for the party to declare a CM face. So there you are. We don't have any news as of yet. What is going to be the reaction of personalities concerned? But remember, the last date for withdrawal of nominations is gone. If anyone quits a party, goes into a self-imposed political quarantine, or any person who sulks or rebounds with redoubled zeal and enthusiasm to then, go about and campaign, like in this logo was in cricket, that remains to be seen. So God alone knows. It's going to be person A or person B. Rahul Gandhi may know. And last, there could be a third person. There could be a dark horse. There could be a split type of a thing. There could be no one. So all the possibilities are there. So we are, at the moment, not having any further information. And as previously
one has been told by our friends, वो कहते ने जी तुसी पंजाबी च बोलिया करो. I wanted to start this in English. अंग्रेजी दे विच मैं इस करके शुरू कीती गल कि sometimes the reach is more. लेकिन पंजाब दे विच अगर पंजाबी दी गल कीती जावे, अज राहुल गांधी जी पहुंच चुके ने लुधियाने, और उन्हां दी गड्डी दे ड्राइवर कौन ने, गड्डी चला कौन रहा है, श्री सुनील जाखड़ जी, जिहड़े किसी भी तवरफ दे मोहताज नहीं, नीड्स नो इंट्रोडक्शन. वो गड्डी चला रहे ने. बहुत ही रिस्पैक्टेड, सुलझे हुए ठरमे वाले कांग्रेस के लीडर, और उन्हें पिताजी लेट बलराम जाखड़ जी रहे ने, किसान लीडर भी रहे, पंजाब चों भी लोक सभा जिते, राजस्थान तो भी जिते, ते लोक सभा के स्पीकर भी रहे. वो गड्डी चला रहे ने. अज सुबह उन्होंने, इट इज़ रिपोर्टेड नॉट कन्फर्म्ड, कि हिंदू अखबार में उन्होंने बयान दिता कि भी मैं इन्होंने इलैक्शनों तो बाद एक्टिव पॉलिटिक्स छड्ड दांगा. हाँ, मैं कांग्रेस का सपोर्टर रहांगा, बेसिकली कि भी ऑर्डनरी मैंबर दे वजों मैं काम करता रहांगा. और इत्थे भी वो खुद इलैक्शन MLA दी लड़ नहीं रहे. वो सिर्फ उन्हों का भतीजा जड़ा है वो लड़ रहा है अबोर तो. इदू पहला, और उस गड्डी दे विच पिछले पासे बैठे ने सरदार चरणजीत सिंह जी चन्नी, जिहड़े कि मुख मंत्री पंजाब ने, ते प्रदेश कांग्रेस पंजाब दे प्रधान सरदार नवजोत सिंह सिद्धू. सो सारे चारों एक्टर जिहड़े भी इस जंग दे विच, इस मुहिम दे विच, इस ड्रामे दे विच सब तो मूहरे ने, उस बैठे ने. हुण रब जाणदा कि राहुल गांधी जी इनू कोशिश करते हैं, 20 नूं करते हैं, कोई तीजा बंदा आ जाता है, या वो कहते हैं कि पहले 2.5 साल ही जाऊगा, दूजे साल वो जाऊगा, या शायद उत्थे टॉस भी कर सकते हैं, कोई वड्डी गल नहीं. और उन्होंने बड़ा एक विस्तृत तौर पर सर्वे करवाया है कांग्रेस के वर्कर्स तो, कांग्रेस के जिहड़े कार्यकर्ता ने, लोकल लीडर्स ने, MLA, साबका MLA, कंटेस्टिंग कैंडीडेट्स, और उन्होंने देख के उन्हों दी सारी जिहड़ी नब्ज है वो की कहती है, वो किहदे वाल है, उन्होंने देख के उन्होंने ये फैसला लेना है. और जिदा मैं दसिया कि अज सुबह भारत रत्न लता मंगेशकर जी 92 साल की उम्र दे विच बंबई विखे ICU दे विच अपना दम तोड़ गए. सुबह तो ही शोक संदेश, कॉन्डोलेंस मैसेजेस प्रधानमंत्री साहब तो भी आए, वो सारे आते रहे. तो ये भी पता लग्या है, रिपोर्ट आई है कि उन्होंने अपना लता मंगेशकर जी का एक जड़ा बड़ा सारा प्लैकेड वर्चुअल रैली वाले थों ते भी लाया हैगा. सो हालांकि ऑफिशियल मोर्निंग है, शोक मनाया जा रहा है 2 दिन का राष्ट्रीय. तिरंगा झंडा जड़ा है हाफ मास्ट से होएगा. ऑफिशियल एंटरटेनमेंट कोई नहीं होएगी, लेकिन इलैक्शनरिंग वाली जी गल हैगी है वो जारी रहेगी. मैनू लगता है शायद उत्थे भी वो 2 मिनट का जड़ा है शोक उत्थे रख लैन. सो जदों ही खबर आती है उस वास्ते फिर आप देखांगे, एंड वी कैन गो लाइव अगेन. सो कमेंट्स जिन्हें आ रहे हैं इस तो बिना तो कोई नहीं. मिस्टर सुलेश गोस्वामी कह रहे हैं, कहते जी मनप्रीत सिंह बादल नूं बनाउणा चाहिए है. तो बठिंडे तो बीबा डॉक्टर मनप्रीत धालीवाल हो रही कह रहे हैं, वी वांट टू सी यू सर इन पॉलिटिक्स. मैं पहला भी बेनती की है कि जो आप पोलिटिकल बयानबाजी कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, ये पॉलिटिक्स ही है. पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं है कि तुसी जरूर एक इंडिपेंडेंट तौर पर इलैक्शन लड़ो या पोलिटिकल पार्टी ज्वाइन करो. तुसी जेडे अपने विचार दिंदे हो तो लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करते हो या एनालिसिस करते हो, दैट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द पोलिटिकल प्रोसेस. और जिदा कि मैं अज अपने एक ट्वीट के विच भी कहा है कि पंजाबियों नूं इलैक्शन तो पहला, इलैक्शन के दौरान और खास तौर पर इलैक्शन तो बाद उन्होंने चकन्ने रहना चाहिए है. थोड़े पास बड़ियां भारी पावर्स ने, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रैशन है, थोड़े को राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है. लोगों को सवाल करो, भावें थोड़े को 10 फॉलोअर्स ने सोशल मीडिया ते तुसीं पुछो. सो ये गल्लां आपां थोड़े नाल करदे रवांगे. 15 मिनट की तकरीबन इन्हां नाल करदे टॉक हो गई. मैं ज़्यादा थोड़ा समान नहीं लेना चाहांगा, पर ये मैं जरूर बेनती करांगा कि अज जो भी सिट्टा निकलता है तो वह काफ़ी इन्फ्लुएंस करेगा पंजाब की इलैक्शन में. किद्दां इन्फ्लुएंस करेगा, किहड़े पासे जाएगा, वो पहले सिट्टे तो पता लगे. तो एंड हाउ द
2 or 3 key players conduct themselves, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 2-3 ਮੇਨ ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਆਲ ਆਈਜ਼ ਔਨ ਵਰਚੁਅਲ ਰੈਲੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇਤੂ ਹਾਰੂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਾਕਸ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਗਰੁੱਪ 'ਚ, ਚਾਹੇ YouTube ਤੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਹੋ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਤੇ YouTube ਦਾ ਲਿੰਕ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਲਾਈਵ ਵਿਊਅਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਹੈਵ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਡੇ ਅਹੈਡ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜੈ ਹਿੰਦ।